नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज नवी दिल्लीत भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमांक 2022-23 स्कोप एमिनन्स पुरस्कार प्रदान केलो. ह्या मेळाव्यात उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी म्हळें की स्वातंत्र्यापासून भौशीक क्षेत्रांतले उपक्रम आर्थीक विकास आनी सामाजीक समावेशनाचें एक शक्तिशाली साधन जालां. तांणी म्हळें की भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमांनी औद्योगिकीकरण, मुळाव्यो सुविधा विकास, सामाजीक वाड आनी संतुलीत प्रादेशीक विकासाची बुन्याद घाल्या. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी म्हळें की भौशीक क्षेत्रांतले उपक्रम राष्ट्र उबारणींत म्हत्वाचें योगदान दिता आनी जागतीक स्तराचेरूय छाप सोडटा. स्वाधीनता के बाद से पब्लिक सेक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक उत्थान की आधारशिला तैयार की थी. समय के साथ इन एंटरप्राइजेस का विकास हुआ. इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने प्रदर्शन से आर्थिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जपानी तंत्रज्ञान आनी भारतीय प्रतिभेचे संयोजन ह्या शतकांतल्या तंत्रज्ञान क्रांतीचें फुडारपण करूंक शकता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. टोकियोत भारत जपान अर्थीक मंचात उलयतना मोदी हांणी म्हळें की जपान हें तंत्रज्ञानाची महासत्ता आसा आनी भारत प्रतिभेची महासत्ता. भारतान AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कम्प्युटिंग, बायोटेक्नॉलॉजी आनी अवकाशात धाडसी आनी महत्वाकांक्षी उपक्रम हातात घेतल्यात. जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है. मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है. JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है. जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है. यानी इन इंडिया capital does not just grow, it multiplies. संरक्षण आनी अवकाश क्षेत्रा उपरांत भारत अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रा खातीर उक्तें करता. जपान सदांच भारताच्या विकास प्रवासात एक म्हत्वाचो भागीदार आसा. महानगरापासून उत्पादन पर्यंत, सेमीकंडक्टर्स पासून स्टार्टअप्स पर्यंत ही भागीदारी प्रत्येक क्षेत्रांत परस्पर विश्वासाचें प्रतीक आसा अशें मोदी हांणी म्हळें. मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए. A shared workforce will lead to shared prosperity. India and Japan's partnership is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape Asian century for stability, growth and prosperity. ह्या वेळा उलयतना जपानाचे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हांणी म्हळें की जपानाचे प्रगत तंत्रज्ञान आनी भारताची उत्कृश्ट प्रतिभा एकामेकांक पूरक आसात, जाका लागून आमच्या अर्थीक संबंदां मदीं नाट्यमय विस्तार आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राष्ट्रीय खेळां दिसा निमतान शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी भारतीय हॉकीचे दिग्गज मेजर ध्यानचंद हांकां आदरांजली ओंपली आनी म्हळें की तांचें दायज पिळग्यांक प्रेरणा दिता. केंद्रीय खेळां वेवहार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी राष्ट्रीय खेळां दिसा निमतान भारताक पयलो मोंडो ट्रॅक मेळ्ळ्याचें सांगलें. मांडविया हांणी नमूद केलें की भारत हो मोंडो ट्रॅक आशिल्लो 25वो देश जाला, कारण हाचे आदीं जगांतले फक्त 24 देशां मदीं हो ट्रॅक आशिल्लो. तांणी म्हळें की नवीन ट्रॅक भारतीय खेळाडूंक जागतीक दर्जाच्यो सुविधा प्रदान करतलो. आज राष्ट्रीय खेल दिन के अवसर पर देश को पहला मोंडो ट्रैक मिला है. ये मोंडो ट्रैक दुनिया के 24 कंट्री के पास है. 25वां कंट्री हम बने हैं, जो हमारे एथलीट, पैरा एथलीट सभी को खेलने के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट देता है, बेस्ट व्यवस्था उपलब्ध कराता है. ये ट्रैक आने वाले दिनों में देश के कई मेडल के साक्षी बनेंगे. भारतीय हवामान खात्यान गुजरातात आयज कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडले 7 दीस उदेंत राजस्थान आनी उत्तराखंडांतल्या कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच आयज कर्नाटकाच्या दर्यादेगेवयल्या सुवातींनी केरळ, माहे, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी ईशान्येक घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
जागतीक आनी ऑलिंपिक भालाफेक विजेतो नीरज चोप्रान स्वित्झर्लंडांतल्या ज्युरिक हांगा जाल्ल्या डायमंड लीग फायनलींत दुसरें स्थान मेळयलें आनी आंतरराष्ट्रीय भालाफेक स्पर्धेंत सलग 26वें टॉप 2 स्थान पटकायलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.